सबसे पहले नमस्कार सभी व्यूअर्स को और जो भी ज्वाइन कर रहे हैं जो भी बाद में देखेंगे। थैंक यू सो मच आपको भी कि हम आज इस संवाद में हैं या इस विषय पे बात कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा जर्नी बड़ी लंबी एक्साइटिंग विथ अप्स एंड डाउन्स रही है। सो 20 साल का जो मेरा अभी एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने एयरलाइंस से शुरू किया था। सो एट द एज ऑफ 18, 18 साल से आई वाज वर्किंग एट मुंबई एयरपोर्ट विद वेरियस एयरलाइंस। वहां से एक मल्टीनेशनल कंपनी, वहां पे कुछ 7-8 साल एज अ मैनेजर। एंड then I decided after marriage to take a break. Okay, so I took a break for my children. And उस समय के जो भी उतार चढ़ाव रहे हैं, I went through depression and a lot of challenges at that time. और उससे उभर कर फिर एक ऐसा वक्त आया जो जहाँ पे ऐसे सोचा कि भाई अभी कुछ तो करना है, अपनी जो पहचान है, अपने खुद को ढूंढना है। सो इस खोज पे मैं निकल गई एंड आई फाउंड माई सेल्फ एट मिसेस यूनिवर्स। सो इस पूरे जर्नी के दौरान जो अप्स एंड डाउन्स है, जो अपने सिचुएशन या अपने आसपास के एनवायरनमेंट से या लोगों से तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंज ना खुद की होती है अंदर। जो बैटल्स हम यहाँ पे फाइट करते हैं, जो सेल्फ डाउट होता है, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ, what am I capable of, what is my purpose in life। सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर कोई आंसर कर पाए तो आई थिंक यू विल रीच सक्सेस। सो थैंक यू everyone who's joined in। एक दो क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, we will definitely take them at the end, or let me see if I can answer that till now। okay, मैम हम अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चंस। अपनी सक्सेस की नेगेटिविटी कैसे दूर करें? सो आशी, कैन यू एलैबोरेट थोड़ा सा और इसके बारे में? आप लिख सकते हो कि सो नेगेटिविटी के मैं बारे में एक थ्रू माय एक्सपीरियंस मैं एक किस्सा सुनाऊं। अगर ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो तो आई वुड बी हैप्पी। सो व्हेन वी से नेगेटिविटी, अपने आसपास तो नेगेटिविटी होती है, लेकिन जो अंदर के अपने सेल्फ डाउट होते हैं ना, वी कॉल दैट सेल्फ डाउट, वो वो सबसे खतरनाक होते हैं। पब्लिक तो आसपास बैठा ही है टू से कि आप ये नहीं कर सकते हो, ये आपसे हो ही नहीं सकता है। और इसके ऊपर हम रहते हैं जो हम कंपैरिजन में लगे रहते हैं। व्हेन वी सी समबडी एंड वी सी ओ माय गॉड लुक एट हर, या शी इज सो ब्यूटिफुल, और ही इज सो गुड, ही इज सो टैलेंटेड। ओके, सो ये हर एक के बारे में होता है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई ओन लाइफ, when I was growing up, I was subjected to a lot of biases। Okay, सबसे पहले उसका था कलर बायस। ओके, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आजकल के फोन्स हमें बहुत सुंदर दिखाते हैं, लेकिन when I was growing up, I was a very let's say dusky, I was, and I still am, I'm quite dusky, dark skinned। सो बचपन से मुझे बहुत सारे नाम, टिप्पणियां, ये सब सुनते हुए आई हैव ग्रोन अप। सो बहुत बार जैसे आई वॉज वेरी एक्टिव इन डांस, इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। सो डांस, सिंगिंग, जो भी है, हमेशा ये होता था कि डिस्पाइट कि मेरा टैलेंट हो, मुझे हमेशा सेकंड या थर्ड लाइन में डाला जाता था। ओके, सो ये कहीं ना कहीं ऑल दीज एक्सपीरियंसेस स्टे विथ यू। Now, while growing up and while all of these things, and then somehow आपको खुद के लिए खुद ही लड़ना होता है, and this is what I did। And imagine के इन सब thoughts से I have gone into a career which is equally glamorous, which is airlines। Okay, and I joined airlines, and day in and day out, your looks or the way you maintain or the way you present yourself is very important over there, है ना? Just like the beauty industry। सो ये सारे थॉट्स लेके वहां पे जाके इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुल योर सेल्फ फ्रॉम दैट माइंड सेट। ओके, एंड आफ्टर फाइटिंग ऑल दीज बैटल्स, देन व्हेन आई गो टू मिसेस यूनिवर्स, और व्हेन आई वांट टू गो टू मिसेस यूनिवर्स, आपके आसपास के लोग हैं जो कहते हैं तुम मिसेस यूनिवर्स जाओगे, हैव यू सीन योर सेल्फ? ओके, एंड दैट टाइम आई वाज रियली ओवरवेट पीपल। I was almost 70 kgs।
when I said कि मुझे मेरा फॉर्म भरना है अभी मिसेस यूनिवर्स के लिए. ओके, सो ये सारी नेगेटिविटी आपके आसपास होती है, पीपल हु पुट दैट डाउट इन योर माइंड. लेकिन आपका पैशन उस चीज के लिए कितना है, कितने शिद्दत से, ये हमने डायलॉग सुना हुआ है, ये हमारे डायलॉग रटा हुआ है कि कितने शिद्दत से आप उस चीज को चाहते हो. ओके, सो ये आप जरूर जरूर इसके बारे में सोचिए, अब जरूर कीजिए, एंड दैट हेल्प्स इन कटिंग डाउन दैट नेगेटिविटी. सी, people talk, you must listen, you must take what you want to take out of it. जो भी उससे पॉजिटिव चीजें है, जो भी उसको आप वर्क कर सकते हो आप खुद के लिए, है ना. सो ये आप चीजें जरूर सुनिए और आगे लेके जाइए, बट थिंग्स दैट पुल यू डाउन, okay, I think you need to stop and think whether you want to listen to those voices or you want to believe in yourself, right? So that is what I feel. Let me see. Thank you, Soumya. Let me see this. There was another experience. There was another question. I'm sorry. मैम, हम अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं? सो आई होप मैंने इसका भी आंसर दिया है. अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक. आपको सबसे अच्छा क्या लगता है अपनी लाइफ में? सो किरण, आपका ये क्वेश्चन है. ओके, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. किरण, व्हाट आई लाइक अबाउट माय लाइफ इज every time I got no as an answer. Okay, so बहुत ही strange है, लेकिन बहुत बार जब भी लोगों ने मुझे कहा है कि I don't think you can do this, okay, I have taken that as a challenge. Okay, so somehow that those no's are where is what brought me to this stage. Okay, so अगर वो लोग नहीं कहते कि आप ये नहीं कर सकते, तो शायद मैं उसे attempt नहीं करती. Okay, so I would have sat in my comfort zone. I hope you know कि हम सब एक अपना एक comfort zone बना लेते हैं और उसी में हम खुश रहते हैं. Okay, but the challenge is to push yourself out of that comfort zone. ऐसी कुछ चीजें आप सीखिए. I've come from an era जहाँ Y2K हुआ था. Okay, so this generation, I hope you know the Y2K, where हम 2000 ईयर में हम एंटर कर रहे थे, and that time I was working at the airlines. Computer is something I used to hate, okay, and that is a time when I realized that, oh my god, I think this is the future. Okay, so ये मुझे सीखना ही पड़ेगा. I cannot say no. So सबसे पहले I cannot say I can't do it, right? So of course I pushed myself to learning, and तभी self learning होता था. तभी ये सारे जितने टेक्नोलॉजीज, जितने सेल्फ स्टडी, जितने क्लासेस अभी अवेलेबल है, वैसे नहीं होते थे. So we had to do it ourselves, and I did that through my years of experience. And now at this stage, I teach women entrepreneurs to make the best use of technology, to make the best use of social media for their product marketing. है ना? So all these things actually are the things that I say that I like about my life, because अगर लोगों ने मुझे ये नहीं कहा होता that you can't do it, probably I may not have done it. The primary factor of me going to Mrs. Universe again was something like that. Okay, so मैं जब कॉलेज में थी, तब से मेरे माइंड में था that I wanted to do maybe a beauty pageant. Okay, but जब मैं कॉलेज के एक फेस्ट में I participated, and I told you that that time I was, if I can use the phrase, I was a very plain Jane. Okay, so I used to not work on myself. I was extremely skinny. मुझे अगरबत्ती और बहुत सारे नाम थे. I was already dark, so वो सारे नाम मुझे थे. एंड ऐसे ही इसमें मैंने खुद की एक हिम्मत बढ़ाई और मैंने कहा कि नहीं, आई वांट टू गो ऑन द स्टेज. वो मुझे स्टेज एक्सपीरियंस लेना है. एंड ट्रस्ट मी, आई नो इवन यू विल एग्री कि स्टेज पे जाना हर किसी के बस की बात नहीं है. यू ऑलवेज हैव दैट फियर ऑफ स्टेज, है ना, fear of public speaking. But I went there and I got booed. Okay, I hope you know the meaning of boo, where you came and people were hooting you down. And that somewhere, वो कॉलेज से लेके मैं जब मिसेस यूनिवर्स की जर्नी पे आई, वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था that this is what I got at that time. But I said no.
If they say no, then I will do it and I will prove it. Okay. And then going on to becoming the first Punekar to go to Mrs. Universe, and then the first Indian to win the Mrs. Universe title. And that's what I feel that is the power of negativity. Okay. So जितना लोग आप उसको जितना नेगेटिविटी आप अंदर सिंक होने दोगे उतना ही आप नीचे नीचे जाओगे, लेकिन उससे आप कितना इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ोगे is what will determine your success. So sir, if you can try your audio. I'm just taking the questions because they're very interesting questions. Monu, I am from Maharashtra, Pune. And let me see some more questions, people. सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? कोमल, very interesting question. What do you think would be the answer? सपोर्ट कौन करता है? प्राइमरीली सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमारा फैमिली होता है. पीपल, आप कहीं पे भी जाओ दुनिया में, कितने भी फ्रेंड्स बनाओ, आजकल बड़ा सा वर्चुअल वाला जमाना है जो आप वर्चुअल फ्रेंड्स बनाते हो. Yes, you have very, very, very precious friends who stand by you like rock solid. And I had my childhood friend who stood by me, always encouraging me in whatever I did. And then, of course, I had my family. Okay, so even now, despite the fact that मैं already, दो बच्चों की माँ थी when I entered the very first beauty pageant. So I definitely had the support of my family, my mother, actually, who really believed in me, even at that age when the whole world was saying, in fact, from the beginning, that's what my parents believed in. We are two daughters. My sister is a doctor. And जब मेरी बारी आई to choose a career, I said I want to join airlines. Okay, so in a family of doctors, nurses, and teachers, when I said मुझे glamour industry airline में जाना है, and everyone was like, what are you doing? But my parents believed in my dreams and they said, okay, go on. Which meant कि मैं 18 साल की उम्र में घर छोड़ के मुंबई जैसे शहर में अकेले रहूं. Okay, but they really gave me the wings. They really gave me the support. And of course, then going forward in whatever choices I made, they have always been with me. So thank you for that question. अपनी सक्सेस की प्रॉब्लम दूर कैसे करें? रिंकू, अगर और कुछ आप इलैबोरेट कर सकते हैं. ओके, क्योंकि सक्सेस की प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने कहा ना, प्राइमरीली अपना माइंडसेट होता है. ओके, कहाँ है in terms of getting the success? So currently, as a soft skills trainer and an image consultant, when I go to a lot of colleges, so training youth of today is my strength and my niche, youth and women. So जब भी मैं students से interact करती हूँ, मुझे यही feedback मिलता है कि we don't feel confident. Okay, somewhere हम उस confidence को lack करते हैं. अगर स्टेज पे जाना है तो I feel conscious. Okay, and I always say that are these the factors that are stopping you in getting your goal? Then you must work on them. For many it is language. Okay, so बहुत लोगों को लगता है कि मैं इंग्लिश ज्यादा fluently नहीं बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. So for them that is something that is holding them back. हाँ, अगर आपके करियर को उसकी जरूरत है उस चीज की, तो प्लीज उस पर वर्क कीजिए. आई थिंक अगर आप स्टार्टिंग से सुनेंगे, सो मैंने ये शेयर किया है कि हाउ there were things that even I had to work on myself. जैसे computers जब भी start हुआ, I hated computers, but I had to learn it. Now I am teaching women and women entrepreneurs how to make the best use of computer. मेरे training programs है. Okay, so which we do for the students. So what are those factors जो आपको रोक रहे हैं आपके सक्सेस को मीट करने? वुमेन्स डे पे वुमेन एम्पावरमेंट भी ये सब कुछ करेंगे, लेकिन आपने इतना सब कुछ आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया. एक तरीके से वो हो गया ना, जो चलेगा वो चलेगा, जो रुकेगा वो रुकेगा. वो कुछ करने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना ही पड़ता है. अगर मैसेज टाइप कर सकते हैं तो प्लीज टाइप कीजिए. मे बी वी कैन डू गोइंग फॉरवर्ड अनदर सेशन. आप लोगों से
उनके टॉपिक्स उनको क्या इच्छा है, what is it that they want to hear from us. So let me give you a brief that I am a TEDx speaker. I am also like you read, India's first Mrs. Universe Confidence title winner, a soft skills trainer and an image consultant currently, and I run an institute in Pune, in the main on the main MG road, where we talk and teach about soft skills and personality enhancement and modeling and fashion grooming. So we do all of this. So let me know what is the next topic you want us to cover, and the young public will take it forward, I'm sure. So, sir, you can use the chat box if you want to tell the people who are watching. So, बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स, आपके क्वेश्चंस आप लिखिए, फ्लायर पे द यंग पब्लिक का कांटेक्ट डिटेल्स है, ईमेल है, so please do write in, and definitely we will meet very very soon. You can connect to me on my ID as well. Shukriya.